So hello and welcome to acoupleofrides, guys. And today we're gonna discuss this helmet. Basically, we're gonna discuss two of the main points about LS2 in Indian market. First is whether it is legal to own this or not, or ride this on our roads. Legal. कर लेते हैं नहीं legal. And the second is कि this carbon fiber, is it worth it or not? So आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़. एंगेज एंड लेट मी नो इफ़ इन केस यू वांट नो एनीथिंग अबाउट एन एक्सेसरी और समथिंग लाइक दैट. सो आगे बढ़ते हैं. तो गाइज before we move forward, you must understand that any accessory, and I've been saying this for a while, कोई भी accessory should not be imbalanced. एक balance होना चाहिए कैश का और परफॉर्मेंस का. सो ऐसा नहीं है कि टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, ज़रूरी नहीं है. बट हाँ, एक बैलेंस होना बहुत बेटर रहता है फॉर अ लॉन्गर रन इन बाइकिंग. तो आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि वेदर दिस हेलमेट फॉल्स इन दैट कैटेगरी ऑफ बैंग फॉर द बक, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. मैं कोई रेसर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल राइडर नहीं हूँ. तो मैं ट्राई करता हूँ दैट आई गेट द बेस्ट बैंग फॉर द बक, एंड वो एक बैलेंस मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी होता है जिसमें कैश में बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाए. तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं अबाउट दिस हेलमेट. सो फर्स्ट इज़ द कार्बन फाइबर वीव. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कार्बन फाइबर वीव इज़ सो नाइसली पुट टुगेदर अंडर द पेंट, एंड इट्स गॉट दैट 3D डेप्थ beneath the paint. And this particular helmet, the construction and the weave is absolutely fantastic. आप देख सकते हैं. I don't know, I'll post these images as well, but the weave is kind of 3D in nature and it's very beautiful to look at. I kind of really like it. Moreover, कार्बन फाइबर के दो वीव्स आते हैं LS2 में. एक होता है 6K और दूसरा होता है 9K. तो ये 6K मॉडल है और एक 9K मॉडल भी आता है जो FIM अप्रूव्ड है. बट things to know is that LS2 is applying all that information that they've learned in MotoGP and races that they're participating with FIM approved helmet. Mind you, this is the best in category approval. I'm not saying this helmet is FIM approved, but they are utilizing some part of that knowledge into lower grade of helmets as well, which gives us some performance over the cash that we've spent. तो वो बहुत एक बैलेंस तैयार होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंटर है वेंट्स. सो ये हेलमेट भरा पड़ा है वेंट्स से. अगर आप देखो तो वेंट नंबर 1, वेंट नंबर 2, वेंट नंबर 3 which is here, plus the spoiler and some stabilizing spoilers over here. This is not a vent, this is like a stabilizing spoiler, and on a higher speed, and I have noticed on higher speed these vents create a lot of stability. तो हाँ, vents की बात करें तो vents भरे पड़े हैं इसमें. एक vent यहाँ पे भी है which directly gives you inseam into the head if in case you need it. So हाँ, vents की भरमार है अगर इसमें बात करें. और मेरे हिसाब से in those hotter days when you want to run on a decent speed, ये वेंटिलेटेड रहेगा और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगा. इन वेंट्स की वजह से द प्लेसमेंट ऑफ वेंट्स इज ऑल्सो सो वेरी नाइसली डन दैट इन केस यू डोंट वांट द एयर, इट ऑल्सो ब्लॉक्स इट. सम हेलमेट्स हैव वेंट्स एंड दे जस्ट डोंट परफॉर्म एज वेल as they placed. इसका ऐसा हाल नहीं है, ये जेन्युइनली तमीज़ से परफॉर्म करता है, एंड आई काइंड ऑफ रियली लाइक इट. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसरीज. सो एक्सेसरीज इस हेलमेट में बहुत सारी आई थी. एक पिन लॉक वाइज़र आया, दूसरा इसमें एक आया क्या कहते हैं, एक हेलमेट लॉक, हेलमेट पैड which is basically a neck brace which came along with it. 2 bags, एक इसका कवर
तो हाँ, heavily accessorized this thing was, and I kind of liked it the way LS2's packaged it for a long term use. तो एक छोटा बैग है जो बेसिकली LS2 के साथ आता ही था, बहुत सारे LS2 के साथ आता है वो नियॉन कलर का बैग. एंड देन was the overall bag. There is a white colored bag that they've supplied, which is semi hard shell, if I may say. बहुत hard shell नहीं है, but हाँ, it retains its construction. तो हाँ, उसमें आ जाता है. तो एक्सेसरीज के नाम पे दैट इज़ व्हाट वी हैड, अ पिन लॉक, नेक ब्रेस, कंफर्टर जिसे कहते हैं, और 2 बैग्स. सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे प्रोवाइडेड इन द केस. सो फिट एंड फिनिश जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी हेलमेट में, तो इसमें अगर आप देखें तो फिट एंड फिनिश एक बहुत ही ज़्यादा किक एस क्वालिटी में फिट और फिनिश तैयार किए गए हैं. The clicking of the visor is very nice. So basically it clicks in place and then you have to push this button to open it, and then it opens. It is a GT helmet, mind you, so it also has this sun visor, which is a very smooth operating sun visor. मैंने अभी तक उसका फिल्म नहीं उतारा है, but I will in due course of time remove that. आगे बढ़ जाते हैं तो अंदर अगर देखें तो चश्मा लगाने की एक जगह है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस पीपल हु राइड विद स्पेक्स. आई डू नॉट राइड विद स्पेक्स, बट आई नो ये बहुत कंफर्टिंग होता है फॉर पीपल हु राइड स्पेक्स. ओवरऑल फिनिश और सीन देखें तो बहुत अच्छी तरीके से मैच्ड है, जो बहुत ही कंफर्टिंग है, दैट इट लास्ट लॉन्ग. दीज आर emergency pullers, you can pull them out. There is a D-ring, which is again a standard in safety. D-rings have always been very useful in any application, so to say. और हेलमेट्स में तो एक स्टैगनेंट हो गए हैं. अंदर मैंने खोल के देखा था, ये क्विक रिलीज पैड्स भी हैं इसमें, और फिट अंदर की और बाहर की बहुत ही अच्छी है. अगर अंदर से जाके देखें तो अंदर स्पीकर्स डालने की एक स्पेशलाइज्ड जगह है, विच इज़ फॉर ब्लूटूथ यूजर्स will be very comforting. Now let's just come down to aerodynamics. Aerodynamics बहुत ही प्यारे हैं. As I said, these spoilers are available. There are 2 kinds of stabilizer spoilers, one on the top, one on the side. I mean 2 on the side and 1 on the top. These really do stabilize, and I'm saying this again, this adds to the aerodynamic nature of this thing. And as I said, they are applying all the knowledge that they've gained in MotoGP into this helmet. So that adds to our value when we pay some money for it. See, this helmet costed about 26,000 rupees, and I'm saying today that it's the best possible combination of cash versus the performance that you get in it. So again, I will be able to answer all these questions in case you have any about this helmet. The fit and finish is so very nicely made that the aerodynamic then plays hand in hand with that finish, because all these seams are starting way earlier in the helmet. So if you notice, these have started way earlier in the helmet, so that it helps in the aerodynamism of the helmet and keeps it stabilized on higher speeds. Even when you open the vent, it stays put. It doesn't make you jiggle everywhere. And I've used helmets in past which claim to be very aerodynamic, but they aren't, and eventually they create so much drag that your face goes back. So on the aerodynamic front, this is also very nicely done. So I kind of really appreciate that as well. Now to sum it up, बहुत सारी चीज़ें इसकी एक ही चीज़ में मैं बता देता हूँ कि what I like is that the fit and finish is absolutely fantastic. The weave I am in love with. weave बहुत ही प्यारी निकल के आई है, और पेंट जॉब बहुत ही अच्छा फिनिश्ड पेंट जॉब है. I know it's a Chinese product, but it's been conceived in Italy, I think, or Spain or Milan, I don't know. But it's basically made in China but conceived in Milan. So that ways they are adding that touch, the Italian touch or the Spanish touch or whatever, the Euro touch that they're doing to the helmet's look. It looks really premium. और मैं अपनी नेकेड बाइक पे से चलाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है. ओवरऑल द वेट ऑफ दिस हेलमेट इज़
1250, which is 1250 kilogram, not kilogram, 1 kilo 250 gram. So that is 1250 grams in all, and that is very very light by any standard in any helmet. तो हाँ, ये बोलना चाहूँगा कि एक बैंग फॉर द बक हेलमेट है. आई थिंक यू शुड ऑल ट्राई इट बिफोर यू बाई इट, बिकॉज इट ऑल्सो कम्स इन वेरियस शेल्स. इट डजंट कम इन a single shell and then adapted to various head sizes. इसके shell sizes ही different आते हैं, which is very important when you find the right fit. और वो right fit on a high speed motorcycle, I think it's the best possible thing that you can do in terms of safety and in terms of usability of any helmet. So in the end, I believe that this is a helmet which has the best possible value of performance versus the buck that you pay. And it only takes you to the realm of, say, a performance helmet, and also gives you the right kind of feel that you want while riding on higher speeds. So on this lighter note, this is a couple of rides signing off. I hope you like the helmet. I hope you should try this. I recommend that you try this and let me know what you feel. So bye.